नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CIET NCERT के इस लाइव सत्र में। टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, इन कक्षाओं के माध्यम से हम समावेशी कक्षाओं के माध्यम से हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं और आप सभी से जुड़ते हैं। मैं सृजन राजपूत आपका स्वागत करती हूं। आप हमें देख रहे हैं क्लास PMeVIDYA चैनल नंबर 1 से 12 के माध्यम से। आप हमें देख रहे हैं हमारे आधिकारिक YouTube चैनल ncertofficial ऑफिशियल के माध्यम से भी, और आप जुड़ सकते हैं हमसे मेल, मैसेज और कॉल के ज़रिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 8800440559 पर। आप मेल लिख सकते हैं हमें ciet.class/आगे 1 to 12, आप जिस भी क्लास से हैं, @ciet.nic.in। इसके अलावा आप YouTube के लाइव चैट बॉक्स में जाकर भी अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये सप्ताह डिसलेक्सिया मना रहे हैं, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन का मुद्दा है। SLD जो विषय है, ये ऐसा नहीं है कि बस नज़रिया बदल लें और ये त्यौहार बन जाता है, गम का विषय नहीं रहता है। आज हम बात करेंगे SLD में स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी जो डिसलेक्सिया है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर कहें कि एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बच्चा के लिखने, पढ़ने और बोलने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो उसका IQ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल जो है, वो किसी हद तक जो है अफेक्ट नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि IQ अच्छा है, लेकिन शायद लिखने पढ़ने की कुछ समस्या हो सकती है। पूरे सप्ताह, ये साप्ताहिक पर्व के तौर पर हमने ट्रेनिंग ली इसकी, और हमने जाना कि इस पर काम करें तो ये और बेहतर हो सकती है। रोज़ नए टॉपिक्स लिए गए और बात की गई। आज का विषय है एक्सेसिबल असेसमेंट। तो अब बात करें कि हमारे गेस्ट से मिलकर कि ये टॉपिक क्या है। पहले मैं इनका परिचय करवा दूं आपसे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्क्रीन पर अनुराधा जोशी मैम। आप प्रिंसिपल हैं सरदार पटेल विद्यालय में। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्निग्धा शिखा पता जोशी, जो कि सीनियर स्कूल स्पेशल सेक्शन कोऑर्डिनेटर है वसंत वैली स्कूल में। आपका भी मैम स्वागत है। थैंक यू। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अनुष्का को। अनुष्का, आपका भी स्वागत है। मैम, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है एक्सेसिबल असेसमेंट, इस बारे में बात करना चाहेंगे। अनु मैम से जानते हैं, अनुराधा मैम से। डू यू वेट फॉर अ फॉर्मल डायग्नोसिस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरवेंशन एंड अकोमोडेशन विद द चिल्ड्रन? आप किसी बच्चे का जब शुरुआत करती हैं अकोमोडेशन के लिए, तो आप एक फाइनल असेसमेंट जो कि हमें किसी डॉक्टर से या किसी डेजिग्नेटेड पर्सन से मिलता है, उसका इंतज़ार करते हैं, या फिर जब एक टीचर ने भांप लिया कि नहीं ज़रूरत है, तो वहीं से जो है इंटरवेंशन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है? मैम, इसमें दो चीज़ों में, दो हिस्सों में आई लाइक टू आंसर. Firstly, through the week, I'm sure you have heard that early intervention is essential. If early intervention is essential and I keep waiting for a doctor's certification, it'll become late. So what we usually do is, if a teacher reports that she suspects difficulty with certain children, we will ask a special educator to make a rough assessment. On the basis of the rough assessment, we will start our interventions, and then as and when the doctor's assessments come, we will weave them into our rough assessment. जी, ये सभी जो बातें अनुराधा मैम ने आपको बताई, ये आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखी। अगला प्रश्न मैं जानना चाहूँगी स्निग्धा मैम से। कैन यू सी ऑल योर टीचर्स आर सेंसिटिव टू डाइवर्स दीज चिल्ड्रंस, मैम? I think today a lot of awareness and sensitivity has come in, and yes, I can say that the teachers today have gone through the process of understanding, being aware, and accepting certain challenges that students have been facing academically especially, and it also has empowered them to learn strategies that they can use in their classrooms. I can say that, and like you can see, you can also see in the slide that it's a process. So the process of learning and teaching is something that teachers today have been working towards, and it is a journey. So it has taken a very long time to undergo this process of developing an attitude of acceptance, belonging, inclusion, but it is
going on. And it will always carry, it will go ahead, it will be further used in the years to come. यस मैम. मैम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, इज़ द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग एकोमोडेशन इज़ स्मूथ रिगार्डिंग यू आर डिस्कसिंग विद स्निग्धा मैम इन दिल्ली CBSE दैट इट इज़ रियली वेरी अवेलेबल? You know, a lot of these accommodations are a part of an ongoing process. Yes. As awareness and increases, and as you gather a stronger idea of the system, it becomes easier for everyone to avail a lot of accommodations. However, as it stands, CBSE itself is offering a number of accommodations and complements to them because they have taken in so very many factors into it. Alternate subjects are available. If the school's medium of instruction is English, for example, and a North student finds it difficult to write the paper in English, they give you the accommodation of letting 1 or 2 children speak or write in a different language. That is permissible. Extra time is given to students. Readers are permitted. Then we have scribes that are permitted. They allow people to type. Accommodations in question papers by way of larger font is available. At places, Braille question papers are available. Accommodation in attendance for special needs is available. Accommodation for spellings and grammar is available. So yes, there are a number of things that are available. But I'd also like to say that it's an ongoing process and it will continue as awareness and understanding grows. I know they are responsive. The the Central Board of Education is very responsive, and should more needs be needed, they do incorporate them from time to time. Thank you. You are describing it very well, ma'am. I really appreciate the way you describe the question. And then my next question is to you, Snigdha, ma'am. What is your take on children with dyslexia? See, students and children cannot be labeled is what I've always believed. Although we need certain words, technical terms when they are assessed, we need to see them when we go through their reports. But अगर आप इस perspective से classroom में जाते हैं तो आपको challenges और बढ़ेंगी और inclusion के बजाय exclusion ज़्यादा हो जाएगा. So children with dyslexia or children with any disability have their own strengths. Yes. And it is very important for us to recognize those strengths and work on those strengths. The weaknesses are something that we also work towards, but हमारी कोशिश यही रहती है कि हम स्टूडेंट को एक होलसम बीइंग की तरह देखें, एक स्टूडेंट की तरह देखें, एक इंडिविजुअल की तरह देखें और उसको रिस्पेक्ट दें. तब जाके आप इंक्लूसिव असेसमेंट्स, इंक्लूसिव अप्रोचेस अप्लाई कर पाएंगे. So student with dyslexia needs attention. Students with any other disability needs attention. Also, they need to feel belonged and accepted. तो ये attitudinal perspective एक जो होता है वो लाना ज़रूरी है. जी. इन 7 दिनों में साप्ताहिक पर्व में, साप्ताहिक ट्रेनिंग में हमने सुना, पढ़ा और जाना डिसलेक्सिया के बारे में. डिसलेक्सिया एक स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें कि विशिष्ट पढ़ने की अक्षमता जो है उससे बच्चा जूझता है. ऐसे में मेरा यही प्रश्न आपसे भी है अनुराधा मैम, आपसे भी सेम मैं आपकी राय लेना चाहूँगी इस बारे में. व्हाट इज़ योर टेक ऑन चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया? You know, we are all different. Yes. Each one of us comes with our strengths and our weaknesses. So instead of focusing on what is my weakness, if I focus on what is my strength, I will help a child build confidence and overcome whatever weakness there is. See, there are ways and means of teaching how to learn. Let me take an example. बहुत बार कहा जाता है क्लास में कि आप एक विषय को विस्तार से बताइए. जी. एक बड़ा सिंपल टेक्निक है जिससे आप किसी भी चीज़ को विस्तार से बता सकते हैं. आपने प्रश्न बोर्ड पे लिखा पढ़ाते टाइम, आपने बच्चों को बोला कि इससे संबंधित सारे शब्द आप मुझे बताइए, तो एक वर्ड क्लाउड सा बन जाता है.
आप फिर बोलिएगा कि आपने जो शब्द लिखे हैं उनको आप एक वाक्य में तब्दील कीजिए। अब हम ने जो ये वाक्य बनाया है इसको हम ऑर्डर करेंगे कि पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा। इस तरीके के से आपने पैराग्राफ बनाया। अब ये चाहे बच्चे को डिसलेक्सिया हो या नहीं हो, एक लर्निंग टेक्निक है। इस लर्निंग टेक्निक से सारे बच्चे सीखते हैं कुछ नया। तो आपके जो पढ़ाने का ढंग है, इफ़ यू आर टीचिंग टू एम्पावर अ चाइल्ड टू लर्न and become a self-learner, it doesn't matter who the child is. It is necessary for all children. The new education policy that has just come up talks about empowering. It's not ABCD alone that is important, but it is how do I learn, which is a life skill for life, which is important. So if you focus on teaching skills to learn, you are empowering all children without creating segregation or differences among any. So that for me would be a more inclusive practice. Yes, ma'am. Is there any example you want to share with us regarding this topic, accessible assessment? I didn't accessible assessments. Yes. Okay. You know, maybe Snigdha ma'am is have some example to share with us regarding accessible assessment. Sure, you know, we in school what we focus is on formative assessments more these days. Summative एक सबको पता है, दो तरीके के assessments हैं, summative है, formative है. Summative are the big terminal examinations, CBSE board examinations, final projects होते हैं. Formative कंटिन्यूअस असेसमेंट्स होते हैं जिसमें आप क्लास में थ्रू डिस्कशंस, थ्रू शॉर्टर प्रोजेक्ट्स, थ्रू पीयर असेसमेंट्स, क्लास में 5 मिनट्स ऑफ क्विज, इन सब से आप बच्चों की लाइक मिस जोशी जस्ट सेड, सारे बच्चे एंड स्पेसिफिकली चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया के साथ आप उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और उनके जो आप वहाँ से जो आप उनके ग्रेडिंग करते हैं या उनको आप स्कोर देते हैं या उनको आप किसी तरीके का एक कमेंट देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक अगेन अ प्रोसेस है जो हम कंटिन्यूसली छोटे क्लासेस से शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे क्लासेस में जब एक टीचर सस्पेक्ट करते हैं लाइक मिस जोशी सेड कि हम वहीं से इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट करके इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं, वहीं से हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट्स शुरू हो जाता है, ओवरऑल एनीवेज होता है. और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इनकरेज करते हैं because it actually helps all children at the end of the day. So examples are very many. And I can't take one example and say कि अच्छा आज बिजनेस स्टडीज़ में सपोज एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाया और बच्चों ने उसके ऊपर बात की, दैट इटसेल्फ आई विल स्कोर दैट एंड आई विल गिव अ फीडबैक ऑन दैट. सो दैट इटसेल्फ कैन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड. मैम, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं ऐसी 2 टीचर्स के साथ, अध्यापिकाओं के साथ बैठी हूँ जिन्होंने इस प्रॉब्लम से ग्रसित जो बच्चे हैं, डिसलेक्सिया से जो बच्चे जूझ रहे हैं, उनके साथ एक लंबा समय बिताया है और आपके पास एक्सपीरियंस की या फिर मैं कहूँ आपके अनुभवों की इतनी फेयर लिस्ट है कि अगर हम इस पर बात करें तो मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, चाहे वो टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, वो सभी अपने आप को एक ऐसा गर्व महसूस कर पाएंगे या फिर आपके जो अनुभव रहे हैं उनसे सीख पाएंगे. मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है और ऐसे में मैं आप दोनों का दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी. मैम, my next question is to you, Anuradha ma'am. You know the time of pandemic, we all suffer from that, the COVID time. Post pandemic, any changes you have seen, ma'am? Oh, many. It's not just children with special needs. There have been so many socio-emotional issues with all children almost. Being cooped up in homes, staying alone for many days, particularly in an age group where friends mean so much, has actually highlighted the neurodivergence in children. It has impacted early speech skills in almost all, because as we all know that little children learn by copying their older ones, their parents, their caregivers. Now if all were masked for so long,
that ability to copy, that ability to form words has been delayed. So yes, almost all children across the spectrum, whether with special needs or not with special needs, have certainly had a setback to their ability to make friends, their ability to accommodate friends, their ability to say, okay, I'll wait my turn, because they haven't had that interaction with their peers, has definitely been affected. It'll take us a good 3 to 5 years to get back to normal. It was very, very gut-rending to hear children who were 17 and 18 who thrive in friendships come and share that we don't have friends, we don't know how to talk, we don't know how far to stand. So that pandemic has definitely, most definitely affected all, and I'm talking about all irrespective of how you label them. The neurodivergent, definitely a little more, because they were already struggling with issues, and social issues with a lot of them because of lack of acceptance has definitely affected their confidence. I wish we could do more. Yes, viewers, you all are watching us with the inclusive training session, और ये सेशन रहा सेलिब्रेशन वीक. हम डिसलेक्सिया का जो सेलिब्रेशन रहा इस पूरे हफ्ते, और आज है 5वां दिन. दिस इज़ द कंक्लूजन डे. इसके अलावा आप कभी भी इन सभी सत्रों का जो है प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से पुनः भी देख सकते हैं. अगला प्रश्न मेरा एक हम कहें कि कंक्लूजन रहेगा, और मैं ये आंसर आप दोनों से ही लेना चाहूँगी मैम. पर पहले स्निग्धा मैम से जानते हैं. मैम, एनी गाइडेंस टू द टीचर्स, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स हु वॉच अस, बिकॉज एवरीवन, बहुत से पेरेंट्स होंगे या फिर बहुत से टीचर्स होंगे जो हमसे जुड़े होंगे. आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, जो बच्चों, जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, अगर वो उन्हें पढ़ा रहे हैं तो? सबसे पहली सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप बच्चों को, अपने कॉलीग्स को, अपने कम्युनिटी में सबको रिस्पेक्ट करेंगे. तो हमें ये सीखना है कि रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब रिस्पेक्ट आ जाएगा तो केयर इन ऑल फॉर्म्स आ जाएगा. केयर इन टर्म्स ऑफ सोशल इमोशनल, केयर इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल सेफ्टी, केयर इन टर्म्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सब हम वी लुक आफ्टर इट. एंड ऑल्सो केयर एकेडमिकली, कि एकेडमिकली इस बच्चे के साथ हम कैसे उसको इनकरेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं. तो इसीलिए टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, फैमिली, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट respect is very important, and so in respect towards inclusion will come when we have that change. And to always be kind, because बच्चे हमेशा काइंडनेस को याद रखते हैं, और काइंडनेस आएगी तो ये जो सारे टेक्निकल प्रोसेसेस हैं इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, असेसमेंट्स हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Yes, topic for today is accessible assessment, but my same question is for you, Anuradha ma'am. I also want to ask for you any guidance to the teachers, parents and the guardians who watch us. If you see the slides, and I hope they're visible for you, the first statement there is the previous slide, please. Sure. The first statement there is promote multi-perspective learning. You know, a little limiting factor has been when we teach our subjects in silos. Say for example, मैं history पढ़ा रही हूँ. The sociology and the psychology prevalent at that time must be included in history. या मैं sociology पढ़ा रही हूँ, the social perspective prevalent historically and psychologically must be taught together. मैं chemistry पढ़ा रही हूँ, there are aspects of physics and mathematics that are included. There are aspects of biology that are included. So if children are taught to think holistically rather than in silos, it will definitely help the understanding of the subject. On the content, what shall I say, the depth of content as well as the breadth of the content both increase. It helps neurodivergent children certainly to say, okay, I'm repeating it. If it is done this way, I can give it this twist. I can look at it this way. Next, if when I am teaching, I teach children how to assimilate and learn,
I build a practice of acceptance by saying it is okay for us to discuss it and put all our points down and then summarize. I am teaching the practice of listening. I'm teaching the practice of collaboration. We're teaching in a much more wholesome manner. I'd like to highlight one more aspect here, that is foster collaborative practices. A lot of the times, teachers feel that if they're not in control of the class, learning won't happen in a certain manner. However, but if we encourage self-directed learning in the care and watchful eye of the teacher, you find that children become better at note making, they become better at creating checklists, they become better at planning, they become better at communicating with others, they become better at dividing work. All these are skills that are needed for life. All these are skills that will help irrespective of the fact whether neurotypical or neurodivergent, and they will help all children. So when the teaching learning style becomes more accepting, more holistic, less controlling, students are given more agency, we definitely succeed as a schooling system. And believe you me, all this is incorporated in the new education policy, which says empowerment is the key to learning. So whether I'm neurodivergent, whether I'm neurotypical, if agency and power are the basis of all learning, and teaching moves from teaching or talking to learning or sharing, we would have achieved one of the biggest aspects of our education system. Yes, ma'am. Snigdha ma'am, as you are a special teacher, special section coordinator in Vasant Valley School, my next question is to you, ma'am. You know what the changes you need according to current time इन एक्सेसिबल असेसमेंट, अभी ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप देखती हैं कि एक्सेसिबल असेसमेंट के रिगार्डिंग अभी के समय के अनुसार चेंज हो जाने चाहिए? सबसे बड़ी चेंज है जो हमारे सबके लाइफ में आई है वो है टेक्नोलॉजी. yes. तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी आपके एकेडमिक या नॉन एकेडमिक डोमेन्स में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. Otherwise, students with neurotypical or neurodivergent, using technology is a very important part. Also at the same time, creative arts बहुत ज़रूरी है, चाहे वो performance based हो या visual arts based हो. एक art form को आगे बढ़ाना for a student with dyslexia or a student with no disability or a student with social emotional challenges, किसी के लिए भी एक आर्ट फॉर्म को साथ लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन स्कूल, वी नीड टू बी अगेन वेरी ओपन, flexible and also understand from the perspective of the student. ये बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ एक balanced approach रखना है to empower. Like Ms. Doshi said, empowerment is the key. NEP भी उसे बोलता है. तो हमें इसका एक balanced approach लेकर आगे बढ़ते रहना है. तभी जाकर इतने सालों से जो हम सब काम कर रहे हैं और आगे 10, 20, 30 सालों में जो हम एक्चुअल इंक्लूजन की बात करते हैं, आइडियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जो अभी हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ना है. जी बिल्कुल. अनुराधा जोशी मैम हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं आप सरदार पटेल विद्यालय में. मैम, आपका भी बहुत लंबा समय रहा होगा बच्चों के बीच पढ़ाने से लेकर अब उनके प्रिंसिपल की आप पोजीशन पर हैं. आपका बहुत लंबा समय रहा ऐसे में बच्चों के साथ. आप क्या सोचती हैं वर्तमान समय को देखते हुए, क्या एक्सेसिबल असेसमेंट्स हैं जो चेंजेस होने चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि असेसमेंट की स्वरूप ही बदल देना चाहिए. असेसमेंट शुड बी टेक अ 360 व्यू ऑफ what a child has gained through his path in school. When we look at people and we talk to people, or even at for college admissions today, academics has definitely an area that is counted, but it should count for 50% of what a child is. There are skills that children need to develop for life, which are learnt at school, way beyond reading and writing. And then inclusion is very much a part of it.
if you look at it, if a child needs to learn that you don't give up. Every time you fall, you get up and work again. That is a skill for life. Creative solutions is what we are seeking today. They're listed on the slide. What in the workspace, you're looking at people who can communicate well, who can collaborate well. The way the vaccine was created for COVID in the world is just an example. A little bit of it was done in America, a little bit in Europe, a large quantity in India. There was collaboration across cultures, there was collaboration across diverse work functions, there was collaboration across languages. For me, that just speaks so very highly of how the world will get to and what are the skills in addition to reading and writing that children need to develop. Lastly, but not the least, to acknowledge children at a level where you don't just acknowledge those who are good at academics, but the happy helpers in school, the very good communicators who are compassionate in school. If you can give them a platform of acknowledgement, you succeed as a school that bridges the differences of neurodiversity and neurotypical behavior. Ma'am, that's really wonderful. Your each and single word is really motivating all the viewers who are watching us, and this is the time to say thanks and बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप दोनों का ही। हमारे साथ अनुराधा जोशी मैम जुड़ी, आप प्रिंसिपल हैं सरदार पटेल विद्यालय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ स्निग्धा शिखा पाता जोशी मैम का। आप सीनियर स्कूल टीचर हैं ग्रीन वैली स्कूल से, माफ़ कीजिए बसंत वैली स्कूल से। आप स्पेशल सेक्शन कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। हमने आज इस साप्ताहिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अंत किया और इस अंत के साथ आपका जो समय था रजिस्ट्रेशन का वो भी अंत होता है। तो ऐसे में क्विज़ का टाइम ओपन हो चुका है, आप सभी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। आपको जाना होगा www.ciet.nic.in। इस वेब एड्रेस पर जब आप जाएंगे तब आपको इसके बाद जाना होगा एक्टिविटीज़ के सेक्शन पर। एक्टिविटीज़ सेक्शन को चुनने के बाद आपको अगला ऑप्शन लेना होगा लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम का। इस सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पर आप ऑन गोइंग एक्टिविटी पर जब जाएंगे आपको ये आज के जो हमारा सेशन है इसकी डिटेल्स दिखाई देंगी, क्योंकि टाइम हो चुका है अब आपका क्विज़ के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके होंगे, आई एम श्योर आपने ज़रूर रजिस्टर किया होगा। अब आप इस क्विज़ को अपनाइए और बताइए कि आपने क्या जाना। अगर आप 70% से अधिक अंक स्कोर कर पाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से भी नवाजा जाएगा। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद करती हूँ अनुष्का का भी। आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, हमारे साथ इस समावेशी कक्षा में जुड़ी। दिस इज़ टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। एक और ज़रूरी सूचना जो कि शैक्षणिक सत्र 2023-2024 की टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग है। आप सभी हम इन टेक्स्ट बुक्स को हमारे सेल्स काउंटर जो कि दिल्ली में, कोलकाता में, अहमदाबाद, बेंगलुरु में है, आप वहां से मंगवा सकते हैं। इन किताबों को मंगवाने का कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। ये सभी सेल्स काउंटर 9:30 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं और सभी अवकाश के दिनों में भी आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन बुक्स का PDF वर्जन या फिर सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना होगा NCERT ई पाठशाला दीक्षा या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल IDs पर जाएं। दिस इज़ ncertbooks.ncert.gov.in। तो बस यूं ही जुड़े रहिए अगले सत्रों से भी। अगले सत्र भी इसी प्रकार eVidya चैनल 1 to 12 और YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। मैं सृजन राजपूत आपसे अनुमति लेती हूं। नमस्कार।